Now coming to loads. Now what are loads? Loads are the external force to which a component is subjected. Okay, external force to which a component is subjected. Okay, हर वो external force which is subjected upon a component, that is nothing but load. Now that external force can be in the form of weight, the self weight, it can be in the form of pressure, it can be in the form of centrifugal force, it can be in the form of inertia force, it can be in the form of magnetic force, it can be anything जो बाहर से जो भी एक्सटर्नल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट एज वेल. ओके, तो एक्सटर्नली जितने भी फोर्सेस किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में, किसी पर्टिकुलर बॉडी में लग रहे हैं, वी नेम इट एज लोड्स. गेटिंग दिस? ओके, नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लोड. नाउ this load can be classified, broadly classified into three parts. First is with respect to time, second is with respect to direction, and third is with respect to area. Okay, now further with respect to time, this load can be classified into static load and dynamic load. Now from name itself it is clear, static load. Static load means the load whose magnitude and direction is not changing with respect to time. The magnitude is not changing, the direction is not changing, with respect to time is nothing but a static load. जिसका magnitude और जिसका direction constant रहता है throughout, that particular load is nothing but the static load. Okay, and dynamic load किसको बोलेंगे? The load whose either magnitude or direction or both magnitude and direction are changing with respect to time, that particular load is known as dynamic load. गेटिंग इज नॉट? ऐसे लोड जिसमें या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग, दैट पर्टिकुलर लोड इज नथिंग बट द डायनेमिक लोड. Okay, now further this static load can be classified into two parts. First is the dead load and second is the gradually applied load. Okay, now what is dead load? Dead load, for example, you can say the self weight of the particular component, that is dead load. That means the magnitude and direction is same from the time the load is existing on the body or from the time the body is existing. That particular load is nothing but the dead load. For example, self weight, as I told you, self weight of the beam, let's suppose हम beam की बात कर रहे हैं, तो उस beam का self weight that is existing from the time the beam is existing. So that magnitude and direction both are not changing with respect to time, that is known as the dead load. Now what is gradually applied load? Now there is a difference between this dead load and gradually applied load. In gradually applied load, after some time we get the maximum load and that maximum load remains constant with respect to time, and that after some time, what I am saying, कुछ समय के बाद, जैसे for example suppose I am having a bar और उसमें मैं एक लोड हैंग कर रहा हूँ, लेट्स सपोज P लोड उसमें हैंग कर रहा हूँ. ओके, तो क्या होगा, इनिशियली धीरे धीरे करके वो लोड बढ़ेगा. इफ़ आई टेल यू द ग्राफ वुड बी लाइक दिस. धीरे धीरे करके उसका जो लोड रहेगा वो बढ़ेगा एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. ओके, और वो जो टाइम है, जिस टाइम में वो जीरो से मैक्सिमम अचीव कर रहा है, डेट टाइम शुड बी कंसिडरेबल. ऐसा नहीं कि वो टाइम बहुत ज़्यादा हो. डेट पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम विच इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, डेट पर्टिकुलर टाइम इज कंसिडरेबल. गेटिंग इट? सो इन डेड लोड में क्या है, अगर हम डेड लोड का ग्राफ देखें, इट वुड बी जस्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट इटसेल्फ द डेट मच पर्टिकुलर लोड इज एक्टिंग, दैट इज नोन एज डेड लोड. और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या हो रहा है, इनिशियली द लोड इज इंक्रीजिंग, धीरे धीरे करके वो मैक्सिमम में पहुंचा एंड देन आफ्टर गेटिंग टू द मैक्सिमम लेवल, नाउ इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. That is known as the gradually applied load. So I think the difference is clear between the static load and between the dead load and the gradually applied load. Okay, so this was about the static load. Now with respect to time, the second classification is the dynamic load. Now dynamic load, as I told you, whose either magnitude changes or direction changes or both magnitude and direction changes, that is dynamic load. Now this dynamic load can be either a fatigue load or it can be a impact load. फटीग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फटीग? फटीग हम अपने लाइफ में भी कई बार महसूस करते हैं, वी फील फटीग. ओके, जिसको हम थकान बोलते हैं. फटीग मीन्स ओवर एंड ओवर अगेन, अगर सेम टास्क इज रिपीटेड, इफ द सेम टास्क वी आर रिपीटिंग थ्रू आउट द डे, ओवर एंड ओवर अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम टास्क इन अ साइकिल, देन इट डेवलप्स फटीग. Getting this? This is the meaning of fatigue. Similarly, if a component is subjected to a cyclic type of loading, okay, that means the loading is continuously varying with respect to time, the magnitude of the loading, the direction of the loading
the loading is continuously varying with respect to time, then you can call it as fatigue loading. For example, the load which is acting on the bridge, okay, in a bridge all type of vehicles travels. It can be a truck, a heavy duty truck, it can be the car, it can be the bike. So the magnitude of the load is continuously changing. So such type of load is known as the fatigue load. Okay. Next type of load, next type of dynamic load is the impact load. Okay. Now what is impact load? Impact, as we all understand the meaning of impact. Impact मतलब किसी चीज़ को अगर हम जोर से कहीं ठोकते हैं, that is known as impact. ओके, फॉर एग्जाम्पल हैमरिंग जब हम करते हैं, डेट इज इम्पैक्ट. इम्पैक्ट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ अ वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. ओके, जो बहुत ज़्यादा फोर्स अगर हम बहुत कम टाइम के लिए लगाते हैं, डेट बिकम्स इम्पैक्ट. एंड दिस इम्पैक्ट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस. जहाँ भी इम्पैक्ट होगा इट विल क्रिएट वाइब्रेशन. एंड लेट सपोज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन इज लेट सपोज कैपिटल टी, एंड द टाइम फॉर विच डेट फोर्स इज एक्टिंग इज लेट सपोज स्मॉल टी. ओके, मैं इम्पैक्ट का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ. कैसे हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर लोड जो है वो इम्पैक्ट लोड है या फिर स्टैटिक लोड है. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैट. ओके, तो लेट सपोज जो जिस टाइम के लिए वो इम्पैक्ट हो रहा है, लेट सपोज दैट टाइम इज स्मॉल टी, और जो उसका वाइब्रेशन हो रहा है, दैट वाइब्रेशन इज हैविंग सर्टेन साइकिल दैट इन द फॉर्म ऑफ वेव. ओके, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें हम जानते होंगे. आई एम एज्यूमिंग कि जो टाइम पीरियड होता है, that time period of that particular wavelength of vibration is let's suppose capital T. And if this small t is less than capital T by 2, small t मतलब time for which the impact is acting. Capital T means the time period of vibration, the time period of wavelength. Okay, so if this small t is less than capital T by 2, then you can call it as impact load. And if this time period small t is greater than 3t, then it will become the static load. Getting the difference between the impact and static? It's all about time. अगर वो उतना ही लोड अगर बहुत कम समय के लिए लग रहा है, then you can call it as impact load, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए लग रहा है उसके बाद, then you can call it as the static load. Getting this or not? Okay. अच्छा, now you will ask कि सर फिर t/2 और 3t के बीच में क्या होगा? तो t/2 और 3t के बीच में अगर हमको मिलता है, then we will consider it as impact load. Why? Because designing is always made for the worst situation. ओके, तो इम्पैक्ट इज वर्स देन द स्टैटिक लोड. ओके, तो अगर टी लेस, नो डाउट क्लासिफिकेशन के लिए हम बोल सकते हैं लेस देन t/2 हुआ तो वो इम्पैक्ट है, ग्रेटर देन 3t हुआ तो वो स्टैटिक है. बट स्टिल अगर t/2 और 3t के बीच में भी आ रहा है, देन ऑल्सो यू विल डिजाइन दिस फॉर इज इम्पैक्ट लोड ओनली, बिकॉज इम्पैक्ट लोड इज द वर्स देन द स्टैटिक लोड. एंड इन ड्यूरिंग डिज़ाइन वी ऑलवेज कंसिडर द वर्स्ट सिचुएशन. ओके, हम डिज़ाइनिंग के टाइम, डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा रूल ही यही है कि किसी भी कंपोनेंट को हमको डिज़ाइन करना है तो वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से, बीइंग सो पैसिमिस्टिक, हम पूरी तरह से पैसिमिस्ट होके फिर उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उसको हमको डिज़ाइन करना है. गेटिंग दिस नॉट? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इम्पैक्ट लोड एंड द फटीग लोड. Now coming to the second classification, which is with respect to direction. Now with respect to direction, this load can be further classified into normal load or it can be the shear load. Now what is normal load? Normal load means, or normal force is the force acting perpendicular to the surface. Normal to the surface. Surface के जो force perpendicular act कर रहा है, that particular load is known as the normal load. As you can see in this particular figure. Okay, you can see the cross section area के load जो है वो perpendicular में act कर रहा है. That load is perpendicular to the cross section area. That particular load is known as the normal load. And what about shear load? Shear load means the load which is acting along the surface. ऐसा load जो कि surface के along act कर रहा है, that is nothing but the shear load. Getting the difference between normal and shear load? Normal load means load is acting perpendicular to the surface. Shear load means load is acting along the surface. That is shear load. Okay. Now further, this normal load can be further classified into axial load or eccentric load. This normal load can be either axial load or it can be the eccentric load. Now what is axial load? Axial load means the load is acting along the axis, as you can see in this particular figure. Okay, here the normal load is acting. Why normal load? Because it is acting perpendicular to the surface, perpendicular to the cross section. That's why it is normal load. First thing, now it is an axial load. Why? Because it is acting along the axis. जहाँ हमारी axis मिल रही है, उसी axis के along act कर रहा है this particular load. So this is known as the axial load.
And what about eccentric load? Okay, eccentric load will act at a certain distance from the axis, as you can see here, at a certain distance, axis के कुछ distance में act करेगा eccentric load. Getting this or not? Okay, so this was the classification of normal load, which is axial load and eccentric load. Okay, now this axial load can be further classified into tensile load and compressive load. Just make this table very clear. ये पूरी टेबल को बहुत क्लियरली बनाना. ओके, क्या देखा हमने विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, दो तरह की क्लासिफिकेशन थे, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड. नॉर्मल लोड में फर्दर दो क्लासिफिकेशन थे, द एक्सियल लोड एंड द इसेंट्रिक लोड. ओके, नाउ एक्सियल लोड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड. ओके, तो एक्सियल लोड को हमने कैसे डिफाइन किया? द लोड विच इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस, दैट इज एक्सियल लोड. Okay, now if that particular load which is acting along the axis is trying to increase the length of the body, okay, it is stretching the body, it is trying to increase the length of the body, then you can call it as tensile load. And if that particular axial load is trying to decrease the length of the body, it is trying to compress the body, then it is known as the compressive load. Now the shear load can be further classified into longitudinal shear and transverse shear. Okay, shear load can be classified as longitudinal shear or transverse shear. Longitudinal shear means the shear which is acting along the length in a beam. If the shear is acting along the length, surface पे ही act करेगा. shear load हमने किसको देखा? the load which is acting on the surface. But if that surface is along the length, the shear will act along the length, then that particular shear is known as longitudinal shear. And if that shear is acting on a surface which is perpendicular to the length of the beam, the surface which is transverse or perpendicular to the length of the beam, that particular shear is nothing but the transverse shear. Next classification, the third classification is with respect to area. Now this with respect to area, it can be classified as concentrated load or it can be the distributed load. Concentrated load, the load which is concentrated at a particular point. Distributed load, that means the load which is distributed throughout the length. Now this concentrated load can be further classified as concentrated point load or it can be concentrated moment. Concentrated point load, as you can see in the figure, okay, the complete load is concentrated at a particular point, that is known as concentrated point load. And concentrated moment, okay, that moment is acting at that particular point, that is known as the concentrated moment. Okay, now coming to the distributed load. Now this distributed load can be either uniformly distributed load or it can be uniformly varying load or it can be the parabolic load. Uniformly distributed load, as the name suggests, the distribution is uniform throughout, or you can say, you can call it as rectangular loading. Rectangular loading means the loading is constantly distributed throughout the length, as you can see here. This is known as the uniformly distributed load. Next, coming to uniformly varying load. Uniformly varying load, or you can call it as triangular loading. Okay, the load is varying but linearly. Load is varying linearly, or you can say triangularly. Okay, so this particular type of loading is known as uniformly varying load. And third type of load is known as the parabolic load. Parabolic load means the loading follows the parabola. That parabola can be either second degree parabola, third degree parabola or anything. ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे. हर तरह की लोडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे. Getting this not, and for each and every type of loading, what are the stresses developed, that we are going to study. As I told you, we are going to study in this particular subject. तो कुछ एक लोडिंग हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और कुछ लोडिंग के हम मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. Getting this?